Welcome back, viewers. Now, the Narcotics Control Bureau arrested Souvik Chakrabarti and Samuel Miranda last night. Sources now say that Rhea could be summoned next to join the investigation over the drug angle. In fact, Dipesh Sawant, even as we speak right now, Sushant's house staff, ex-house staff, is currently at the NCB and is being questioned by the officers. Let's go across to my colleague Madhurima now joining us live from outside the NCB office, and also my colleague Gaurav, who's outside Rhea's residence. Madhurima, to you first. We have seen as to how there were so many fast-paced developments that happened since yesterday morning, where there were multiple raids that were first conducted at Rhea Chakrabarti's residence, as well as Samuel Miranda's residence. And post that, they were picked up, and late last night, they were officially arrested. Please share more details as far as Dipesh Sawant goes, and what more are you picking up so far in the investigation? Yes, NCB in a major crackdown arrested Samuel Miranda and Rhea Chakrabarti's brother in the drug nexus case. And as we were reporting outside the NCB office yesterday, all of a sudden we saw that the Dipesh Sawant was being brought in by the NCB officials in the same case. And as we know that Dipesh is one of the major people who was involved in the entire nexus, NCB nabbed him and has been grilling him ever since last night. This was around 10:30 p.m. that Dipesh Sawant was brought in, and it's over 7 now. So the grilling has been happening for past 9 hours and is expected to go soon. And next we believe that Dipesh will soon be arrested, and next on the line is Miss Rhea Chakrabarti, who has been making frivolous claim about Sushant taking drugs. But however, as the truth unveils itself and unravels, we get to know that it was not Sushant but Rhea who was involved in taking drugs and even selling and consumption. So right now the NCB officials are at it. They are grilling all aspirants as suspects here. Also, when we talk about Samuel Miranda and Souvik, they'll be presented in the court today, and henceforth what will happen will be decided, that what will be the course of action. And Rhea Chakrabarti, there is a major possibility that could be next on the line, where she will be interrogated, because we know that we've unearthed such chats where it clearly shows that yes, she was involved in consumption of drugs, and she has been talking about drugs intake and several other aspects around the nexus with several other people, including Gaurav Arya. So clearly, Madhurima, the focus is back on Rhea Chakrabarti. We'll also go across to my colleague Gaurav now joining us live from outside Rhea's residence. Gaurav, focus is back on Rhea Chakrabarti now. We saw how allegedly it was Souvik who said during the interrogation that it was on behest of Rhea Chakrabarti that he was procuring these drugs. Please share more details. Will Rhea be summoned today? इस बात की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आज रिया को सम्मन किया जाए। देखिए, क्योंकि जिस तरीके से इस पूरे ड्रग कार्टेल में या इस पूरे ड्रग का जो इनका नेक्सस था, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन और कंजम्पशन दोनों ही था, उसके सेंटर में रिया चक्रवर्ती है। क्योंकि सैमुअल मिरांडा ने यह भी कहा कि रिया चक्रवर्ती के कहने पर या सोविक के कहने पर वो ड्रग लेकर आता था सुशांत के घर पर। लेकिन इस चीज़ में ये भी एक समझने वाली बात है, क्योंकि जो एनसीबी के सोर्सेज कहते हैं कि रिया का कोई डायरेक्ट लिंक जो है वो अभी किसी ड्रग पैडलर से नहीं मिला है, लेकिन सोविक चक्रवर्ती के तमाम ड्रग पैडलर्स के साथ कांटेक्ट मिले और उसने कई ड्रग पैडलर्स के नंबर आगे शेयर भी किए हैं। अब ऐसे में रिया चक्रवर्ती ड्रग मंगाकर करती क्या थी? क्या इस बात का आरोप जो लग रहा था वो सही है कि क्या सुशांत को जाने अनजाने में बिना उसकी इच्छा के ड्रग दिया जा रहा था, जिसकी वजह से वो ड्रग का आदी हुआ, उसको और ज़्यादा प्रॉब्लम्स या मेंटल प्रॉब्लम्स या हेल्थ इश्यूज़ हुए? इन सारी चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करना है एनसीबी को। और अगर जैसे कल की बात करें, कल सुबह की जो तस्वीरें थी, ये रिया के चक्रवर्ती के घर के बाहर काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। सुबह 6:40 पर ही एनसीबी की जो टीम है वो यहाँ पर हाउस रेड और सर्च के लिए आ गई थी। लेकिन जो पूरी सर्च रेड चली तकरीबन 3 - 3 घंटे की बाद, उसके बाद लैपटॉप और रिया का एक पुराना मोबाइल जो है वो सीज किया गया था, और उसके बाद समन भी दिया गया था सोविक चक्रवर्ती को, और उसने खुद इच्छा जताई कि वो मीडिया के सवालों से बचने के लिए साथ जाना चाहता है एनसीबी के। वो गया और उसके बाद उसकी ऑफिशियली अरेस्टिंग हुई, सैमुअल मिरांडा की अरेस्टिंग हुई। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अब तक कुल 7 जो अरेस्टिंग है वो हो चुकी है, और इसके अलावा दीपेश जो है उसको ग्रिल किया जा रहा है। हो सकता है कि उसे 8 या 9 बजे के आसपास जो है ऑफिशियली अरेस्ट कर लिया जाए, और संभवतः उसे आज जो है शाम तक जो है
कोर्ट में पेश भी कर दिया जाए। आज शौविक जी। चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा की उन्हें कोर्ट में भी प्रोड्यूस करना है, और जो एनसीबी का दावा है कि उनके पास स्ट्रांग केस है कि उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन किया ड्रग का, कंजम्पशन किया, और ये इसमें कम से कम 10 साल की सजा तो मान के चलिए कि हो सकती है, लेकिन ये निर्भर करेगा So कि किस clearly तरह all से eyes will be on the evidence के NCB as well as Shovik as well as Samuel Miranda, who will be presented in front of court today. Many thanks Gaurav as well as Madhurima for joining us with the latest.